Dear friend, welcome back. It is the second part of your class 9th lesson, How I Taught. Kaveri Bohiro, kono achi? How I taught. How I taught my grandmother. How I taught my grandmother to read. To read. How I taught my grandmother to read. ए लिखिछन्ते किए सुधा मूर्ति. Who is the writer? सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति कर नाइस राइटिंग टा. तो आपण माने फर्स्ट पार्ट देखि थिबे. फर्स्ट पार्ट रे मु कहिछि जदि देखि नथिबे फर्स्ट पार्ट को देखि दियंतु जे गोटे कहानी अच्छी. फर्स्ट पार्ट में कौन कहते गोटे कहानी अच्छी कौटिकार कहानीटा जोटे कि काशी यात्रा विषय. तो ये काशी यात्रा को राइटर ग्रांड मदर शुणापी बहुत आग्रह प्रकाश करिसेंती. तो से ता स्टोरीटा कहूँ गोटे ओके समर सीजन समर नाइट रे आफ्टर डिनर परे. तो जेते बेले राइटर छोट थांती 12 वर्ष थांती से समय रे से गोटे टेरेस रे कौन करथांती सोई थांती समर नाइट आफ्टर डिनर. ओके तो से समय से कहते मु जेते बेले छोट थिला बेले को मो माँ मरी जाइछन्ते. मो माँ मरी गला पर मो बापा सेकेंड मैरिज करिछन्ते एवं मो बापा जेते बेले सेकेंड मैरिज करदेले मते कम बयस रे विवाह करबा को पड़िथिला. कम बयस रे बाहा हेइथिली एंड तापर मोर पुओ जो होगला पर तांकर रोसे करवा खुआई देवा से मानको जत्न नेबारे व्यस्त रही. हेले आज मु चिंता करुचे जे से मानकु केमिति भल भाव में पाठ पढ़ी पारे से माने केमिति भलरे रहिबे से चिंता करी मु आज वृद्धा हो जाइछि बा 62 इयर्स हो जाइछि. 62 इयर्स ऑलरेडी हो जाइछि. तो ए कहानी जेते बेले कहउछंती सेते बेले हमर राइटर टिके आश्चर्य प्रकाश करुछंती. देखंतु ए सेकंड पार्ट रे कोन कहउछंती राइट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी ए 12 ईयर ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट. तो से बुझी पारिलेनी जे एक्चुअली वास्तव में मते कहीं गोटे 12 वर्षर छुआ को ए 62 वर्ष बयसर वृद्धा महिलाटा कहीं मते ए स्टोरीटा कहूचे ता अतीत रे कौन होइतला एक्चुअली जनरली द किड्स डू नॉट अंडरस्टैंड और डू नॉट ट्राई टू लिसन द टॉक ऑफ the old woman or old man. But what had happened एठारे कौन है देखंतु. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. तो से वर्तमान कहला जे मु मो ग्रैंड मदर को इमेंसली भल पाए बा एक्सट्रीमली भल पाए. इमेंसली माने एक्सट्रीमली. सो आई इमेंसली और एक्सट्रीमली लव माय ग्रैंड मदर. सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन why she is telling me the story. What is the reason behind it so that she is telling me the story. So she realized, who realized? The author realized, the narrator realized, and I looked at her face. मु ता face को देखिली and it was unhappy and her eyes were filled with tears. ता आखिरे लुह छल छल होताए आसु बाहरी आसु थाए. एंड शी वाज ए गुड लुकिंग लेडी एंड हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. सो शी लुक्स सो ब्यूटीफुल. शी इज ए गुड लुकिंग लेडी एंड ऑलवेज स्माइलिंग लेडी. ऑलवेज शी स्माइल. बट टुडे even today I cannot forget the worried expression on her face. सो आज मत मु भूली पारिउ नाही जे ता मन भितर केमिति एक्सप्रेशन अछि केमिति अनहैप्पी एक्सप्रेशन अच्छी बा ओरिड हैप्पी ओरिड माने विचलित अच्छी विचलित अवस्था देखा जाउछि कहीं. एंड आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. मु ताकू लीन करी गली. लीन माने टिके नई गली. नई जाइके ता हाथ को धरिली. का हाथ को धरिली. ओके द राइटर होल्ड हर ग्रैंड मदर्स हैंड राइट. आउ कौन कहला आभा डोंट क्राई. What is the matter? Can I help you in any way? See, the 12 years old child is asking Abha, mother, don't cry. Kandona.
कौन होइछि घटनाटा कौन होइछि कैन आई हेल्प यू इन एनी वे मु तोते कहू ओके तुमको केमिति साहाय्य करि पारिबी किए कहउछंती द लिटिल चाइल्ड ओके लिटिल चाइल्ड 12 year child is asking her grandmother Abha can I help you in any way then what is the reply from the grandmother said yes I need your help हाँ मु तोर ओके हेल्प टा आशा करूची आई नीड योर हेल्प एंड यू नो व्हेन यू वेर अवे तू जानिछु जेते बेले तू बाहरे थिलु कर्मवीर केम एज यूजुअल कर्मवीर इज ए एपिसोड कर्मवीर इज व्हाट द वीकली मैगजीन केम यूजुअली सबु बेले से आसुथिला आई ओपन द मैगजीन से मैगजीन को मु जेते बेले ओपन कली खोलिली आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies the story काशी यात्रा and I could not understand anything that was written so what had happened dear child when you were a front or away from my house at that time Karmavira a magazine usually comes to me but I did not able to read it only I saw the picture but I did not understand okay the story is Kashi Jatra but I could not understand anything was written so many time I rubbed okay many time I rubbed my hand over the page okay so many time I rubbed my hand over the page okay wishing they could understand that was written से आशा करूथिले जे काले मु जदी पढ़ी पारंते कि केमिति हुअंता right but I knew it was not possible it is not possible because I am illiterate I can see the picture I can understand it may be the Kashi Jatra because all the pictures were from Kashi so that I tried my best to study I tried my best to understand the story but I did not understand if only I was educated जदि मु शिक्षित हेई थांती educated enough I waited eagerly for you to return ओके जदि मु एजुकेटेड हेतांती मु पढ़ी पारु थांती एणु मु तते इगरली आग्रहर सहित अपेक्षा करथिली जे तू केबे फेरी आसीबु बोली राइट आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी तो तू जेते जल्दी आसी थांतु एवं मो पाई जदि पढ़ी दे थांतु तेबे मु बहुत खुशी हे थांती बोली ग्रैंड मदरटा ता ग्रैंड चाइल्ड को कहउचंती I even thought of going to the village and asking you to read for me आ बेले बेले आ मु कोन भाबुथिली मते बेले बेले थॉट आसुतिला भावना आसुतिला जे मु से गाँ को जो मैरिज पार्टी जाई थांती छुआटा मु से गाँ को चली जीवी एवं कही थांती तोते कही थांती जे मो पई एई कर्मवीर बा काशी यात्रा स्टोरीटा पढ़ी दे बोली कही थांती हेले मु साहस कली नहीं I could not have asked somebody somebody in the village but I was too embarrassed to do so मु गाँर कहा कहली नहीं कारण न कहबार कारण मते एम्बारास फील लागुतिला एम्बारास मीन्स कौन जोटा कि मते खराब लगुच मते लज्जित लगुच बा मते ऑकवर्ड फील हेबो बोली मु कहा कहली नहीं आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस एणु मु निजे को गोटे भाविली जे मु गोटे वर्तमान कौन डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस ओके अन्य ऊपर निर्भर करूछि एवं मु गोटे हेल्पलेस हो जाइछि जे कि मते सहाराहीन भाव में हो जाइछि जेहेतु मो पाखरे सब किछि अछि हेले मु पढ़ी पारुनी बोली कौन हो जाइछन्ति से डिपेंडेंट हो जाइछन्ति एवं हेल्पलेस मने करूछन्ति सो वी आर वेल ऑफ but what use is the money when I cannot be independent so the grandmother is saying that we are well off means what wealthy right well off means wealthy ओके जार धन संपत्ति बेसी थाए ताहाकू वेल ऑफ बोली कह जाए वेल्दी बा रिच बोली मध्य कह जाए वी आर रिच फैमिली वी हैव एवरीथिंग वी हैव मनी वी हैव बंगला वी हैव गाड़ी वी हैव एवरीथिंग बट
व्हाट यूज ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट मु जदि स्वतंत्र हो पारिबी नाही इंडिपेंडेंट हो पारिबी नाही तो तेबे ए पैसार लाभ कौन बोली ग्रैंड मदर टी कहउछंती सो आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर तो मु बुझी पारिलिनी एठी आई किए एठी हला राइटर हु राइटर किछि बुझी पारिले नाही मु कोन उत्तर देबी ए बुढ़ी माँ को बा मो बुढ़ी माँ को मु कोन उत्तर देबी किछि बुझी पारिलेनी किंतु से ओके कोन भाबी की कहले आभा कंटिन्यूड आभा चल कही चल माँ कही चल ओके सो आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड तो से कहला जे मु काली ठारू कौन करबी आई वांट मु चाहे ओके मु डिसाइड करिछि आई हैव डिसाइडेड मु डिसाइड करिछि तो आई वांट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट काली ठारू मु कन्नड़ अल्फाबेट टा सिखिबी कौन कन्नड़ अल्फाबेट सिखिबी काली ठारू सिखिबी एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड मु कठिन परिश्रम करिबी बहुत परिश्रम करिबी एवं आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग द दशहरा एज द डेडलाइन ओके जो दिन दशहरा हॉलिडे थिबो दशहरा समय थिबो दशहरार सरस्वती पूजा बेलकु मु एई अल्फाबेट कंप्लीटली शिखी जाइथिबी बोली मु दृढ़ प्रतिज्ञा करूची बोली ग्रैंड मदर टी कहले काहाकू कहले राइटर को कहले राइटर एट दैट टाइम एट व्हाट एज एट दैट टाइम राइटर रो बयस हे थाए 12 वर्ष राइट 12 वर्ष होता है तो सेते बेले ग्रैंड मदर कहले मु कठिन परिश्रम करी एवं दशहरा पूजा सुधा मु डेफिनेटली सरस्वती पूजा दशहरा भितर को मु निश्चित रूप से अल्फाबेट शिखी जीवी बोली से डिसाइड कले एंड दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड द नोवेल ऑन माय ओन से दिन भितर मु नोवेल को प्रांजल भाव में केमिति पढ़ी पारिबी सेति पई से दृढ़ प्रतिज्ञा कले राइट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट मु चाहूँगी मु केमिति स्वतंत्र रही हाउ टू बी इंडिपेंडेंट माई सेल्फ विदाउट डिपेंड ऑन अदर टू रीड समथिंग राइट सो आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस एंड येट आई laughed एट हर ओके तो आई मीन्स किए राइटर नेरेटर से देखिले तार डिटरमिनेशन दृढ़ प्रतिज्ञा से केमिति दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ मना होती से देखिले ता फेस रे येट तथापि मु ता उपरे हसिली ताच्छल्य करिली राइट ता उपरे ओके लाफ्ट एट हार मीन्स ताकू ताच्छल्य करिकि मु हसिली आउ कोन तापर मु कोन कहली यू कैन सी दैट ओके तापर से ताच्छल्य करी हसिकी कहले आभा okay Abha at this age of 62 you want to learn the alphabet हैं माँ अभा तोते 62 वर्ष हेलानी एबे तू कौन अल्फाबेट शिखिबो राइट सो यू ओके ऑल योर हेयर इज ग्रे तोर सबू बाल गुड़ाक पाची गलानी राइट ग्रे सबू बाल पाची गलानी योर हैंड्स आर रिंकल हाथ गुड़ाक कुंचु कुंचिया हो सारानी एंड यू वेयर स्पेक्टाकल एंड यू वर्क सो मच इन द किचन तो वर्तमान तोर कौन बाल पाची गलानी हाथ गुड़ाक कुंचु कुंचिया पड़ी गलानी आखिरे चश्मा पिंधि सारिलुणी आम पाई बहुत काम करूचु एणु एबे वर्तमान तू अल्फाबेट शिखिबु So it was very ridiculous. Okay, the girls laughed at her, mocked her, मन तात्सल्य करी हसिला. तो childishly, okay, गोटे छुआ भली भाबरे I made fun of the old lady. मु गोटे छुआ मानक भली मोर गोटे वृद्ध महिला को वृद्ध लोकन को मु तात्सल्य करिकी हसिली. But she just smiled. किंतु से मते किछि रागिले नहीं स्माइल करदेले हसी देले राइट हसी देकी कहले फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड देन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल जदि भल काम पाई जदि डिटरमाइन अछ प्रतिज्ञाबद्ध अछ बा शक्त मन दृढ़ मनोबला अछ तेबे यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल जे कोनोसी ऑब्स्टैकल जे कोनोसी कष्ट बाधा विघ्न आसुना कहीं जदि भल पाई चिंता कर तमें ताकू ओवरकम करिजिवो ताकू कौन ताकू हैंडल करि पारिबो राइट आई विल वर्क हार्डर
एंड देन एनीबडी बट आई विल डू इट मु अन्य लोक ठारू अधिक परिश्रम करी हेले निश्चित रूप से मु करके देखेबी कौन मु पूजा वेकेशन भितर मु कौन शिखी अल्फाबेट शिखी एवं दशहरा बिलक पढ़ी पारुथी बोली से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं गले किए ओल्ड ओमेन ओल्ड लेडी एंड फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार शिखिबा पई कौन सी एज बार नहीं शिखिबा पई कौन सी बयस नहीं बयस सीमा किछि आमको ऑब्स्टैकल करि पारिबो नहीं बोली किए कहले द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर ओके सो सी what is strong determination made by the okay old omen the next day onward asanta kali tharu I started my tuition ava was wonderful student okay it is a very beautiful things right okay I started my tuition right tuition so you can see that tuition tuition right so somebody make blunder that tuition right some people write like this but it is wrong pronunciation or wrong okay writing this is tuition tuition mu asanta kali tharu aba mu tote tuition पढ़ेबी and you are my wonderful student you will be the my wonderful student right the amount of homework she did was amazing yeah so jete bele eha ko पढ़ाई दउथिले सेते बेले she was very wonderful okay she was surprised बहुत surprise हे जोथिले amazing हे जोथिले काहे कि she would read and repeat write and recite से कौन करथिले पढ़ुथिले रिपीट करुथिले लेखुथिले एवं पुनी थरे रिसाइड करुथिले पुनरावृत्ति करुथिले किए ग्रैंड मदर ओके सो व्हाट शी वाज डूइंग शी वुड रीड से पढ़ुथिले रिपीट करुथिले पुनी थरे पुनरावृत्ति करुथिले लेखुथिले आ पुनी ताको रिसाइड करुथिले बार बार रिसाइड करुथिले सो आई सॉ हर ओनली टीचर एंड she was my first student so I was her only teacher I was her only teacher mu तारो गोटे मात्र शिक्षक थिली and she was my first student से मोर प्रथम स्टूडेंट थिले right and a little did I know then that one day I would become a teacher in the computer science and teach hundred of students सेही दिन ठू little I did I know मु सेते बेले अल्प जानी थिली जे से कहउचंती अल्प टिके जानी थिली जे one day I would become a teacher मु दिने कोन गोटे टीचर है जीबी एवं शह शह छात्र छात्री माननकु कंप्यूटर साइंस पढ़ाइबी बोली से भाबी नहीं थिले राइट द दशहरा फेस्टिवल केम देख एबे वर्तमान दशहरा फेस्टिवल आसी जाइछि पूजा सरी जाइछि सरस्वती पूजा सरी जाइछि केम यूजुअल एंड सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा मु सीक्रेटली गोटे काशी यात्रा नोवेलटा मु किणी आनली सीक्रेटली माने लुचे के मु किणी आनली मु मो ग्रैंड मदर को देखैली नाही एंड व्हिच had been published as novel by that time से समय से रिसेंटली से नोवेलटा पब्लिश होई थाए एंड माय ग्रैंड मदर कॉल्ड मी मो ग्रैंड मदर मते डाकिले किए डाकिले ग्रैंड मदर डाकिले कहा को डाकिले ग्रैंड डॉटर को डाकिले आ ग्रैंड डॉटर मदर सीक्रेटली गोटे कोन गोटे काशी यात्रा बहिटा किणी आनी छंती एंड टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल ओके तापरे ता ग्रैंड मदर ताकू डाकी छंती एवं पूजा प्लेस जोटी पूजा स्थान रे तांकू बसैले मेड मी सिट डाउन माने बसैले सिट डाउन माने बसिबा मेड सिट डाउन माने बसैबा ओके किए बसैले ग्रैंड मदर मेड हार सिट डाउन ऑन द पूजा प्लेस ऑन ए स्टूल गोटे स्टूल ऊपर बसैले एंड सी गेव मी ए गिफ्ट फ्रॉक मटेरियल से मते गोटे गिफ्ट देले किए गिफ्ट देले ग्रैंड मदर गिफ्ट कौन गिफ्ट देले फ्रॉक मटेरियल फ्रॉक रो कोनाटी गोटे गिफ्ट देले एंड देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल तापर गोटे अनयूजुअल कामटा करदेले अनयूजुअल काम माने साधारणतः सेमिति काम केबे हुएनी सेमिति काम करिकी देखै देले किए ग्रैंड मदर को टाइप रो अनयूजुअल काम देखिबा ओके सी बेंड डाउन नई पड़िले एंड टच माय फीट
कथा तो शुणिबारे मते निश्चित कांद लगुच जे 62 बयसर गोटे वृद्धा जेते बेले शिखी तो ता नातुणी पाखरे से कौन करिसंती नातुणी पाखरे बसी जैसे तांको नी को बेंड करिकी ता नातुणी फीट को छुईंती ता फीट को छुईकी नमस्कार टे करिसंती प्रणाम टा करिसंती सो इट इज डेफिनेटली अनयूजुअल एंड आई वाज सरप्राइज एंड टेकन अबाक मते सरप्राइज लागिला मते आश्चर्य लागिला किए कहउछंती राइटर कहउछंती नरेटर कहउछंती ओके सो मो आखिर मध्य टीयर आसी जाऊँ सतरे वास्तव जिनिस आई एम ऑल्सो फील ऑकवर्ड एंड आई एम क्राइंग राइट जस्ट आई एम डेफिनेटली द टीयर इज कमिंग आउट ऑफ माय आई ऑल्सो तो एटा गोटे सरप्राइज करदेला क्या राइटर को सरप्राइज एंड टेकन एबाक माने से आश्चर्य हो गले काबा हो गले राइट सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड यस शी हैड नेवर सीन सच एन इंसिडेंट दैट ए ओल्डर पर्सन कैन बो ऑन द फीट ऑफ ए यंगर वन ए लिटिल वन राइट सो अबाक हो गए टेकन अबाक एंड एल्डरली नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर गोटे बड़ बड़ लोक माने एल्डर्स माने वृद्ध लोक माने गोटे यंगस्टर मानकर फीट को केबे मध्य टच करती नहीं छुअंती नहीं एटा हमर कल्चर रो बाहर किंतु वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स एंड टीचर्स आमे सबु बेले कौन करिथाऊ भगवान कर पाद को छुई थाऊ बड़ लोक मानकर पाद को छुई थाऊ एवं गुरुजन मानक पाद को छुई थाऊ हेले एंड वी कंसीडर दैट द मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आमे जदि भगवान बड़ लोक किंबा टीचर रो पाद को छुई कि नमस्कार करिबा तेबे यह रेस्पेक्ट ओके यह गोटे रेस्पेक्ट बोली गणना करा जाय थाए राइट आई होप दैट आपण माने बुझी पारुथिबे एंड इट वाज ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रेवेंस ओके रिवर्स हैड हैपेंड तो इटा गोटे आमर गोटे परंपरा ग्रेट ट्रेडिशन माने परंपरा किंतु एबे एटा वर्तमान रिवर्स हो जाए रिवर्स माने कौन छोट बड़ लोकटा छोट लोकंकर पाद को छुईछंती मा उल्टा हो जाए रिवर्स हो जाए रिवर्स हैपेंड एंड इट वाज नॉट करेक्ट एटा ठीक आदौ ठीक नुहे एटा जमा भी ठीक नुहे बोली किए द लिटिल चाइल्ड रियलाइज इट and she said I am touching the feet of my teacher of a teacher देखंतु सी माने किए ग्रैंड मदर आभा कहले जो कौन कहले जे आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर मु गोटे गुरुर फीट को छुची ओके नॉट माय ग्रैंड डॉटर मोर नातुणी रो फीट को मु छू नाही वर्तमान मु कार फीट को छुची मोर टीचर मोर गुरुर फीट को मु छुई की प्रणाम करूछि ए टीचर हु टॉट मी सो वेल गोटे टीचर गोटे शिक्षक मते अति सुंदर भाव अति प्रांजल भाव पढ़ेला एंड विथ सो मच ऑफ affection that I can read any novel confidently in such a short period ए छुटिया अल्प समय मोर गुरु मोर शिक्षक एते सुंदर भाव में पढ़ेले जे आज मु नोवेल को इजीली एवं कॉन्फिडेंटली पढ़ी पारु अछि राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट वर्तमान मु स्वतंत्र वर्तमान मु स्वाधीन एंड इट इज माय ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए टीचर एणु यह है मोर कर्तव्य मोर ड्यूटी मोर कर्तव्य जे मोर शिक्षक को मु केमिति रेस्पेक्ट करिवि इट इज माय ड्यूटी टू रेस्पेक्ट माय टीचर राइट एंड is it not written on our scripture that the teacher should be respected irrespective of gender and age so आमर जो धर्म ग्रंथ मानकरे लेखा जाइए आम धर्म ग्रंथ रे कौन लेखा जाइए आम धर्म ग्रंथ रे आम ग्रंथ मानकरे लेखा जाइए आम स्क्रिप्चर रे लेखा जाइए जो टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड शिक्षक मानकु सम्मान देबा निहाती दरकार एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज से मानकर जेंडर जहाँ भी हो ना कहीं से मानकर ओके स्त्री हंतु पुरुष हंतु या जो कौन एज रो ना ताहा छोट हंतु या बड़ हंतु टीचर ऑलवेज बी टीचर वन हु टीच इज ए टीचर एणु तांको सम्मान देबा निहाती दरकार सो आई डिड रिटर्न हार ओके नमस्कारा तो आई डिड रिटर्न हार नमस्कारा टू हार बाय
touching her feet and gave my gift to my first student. See, in return, the child is also did her namaskar touching on her feet. तार जेजे मार फीट को स्पर्श करिकी नमस्कार करिकी से ता गिफ्टटा देला. ता गिफ्टटा कौन थिला? ता गिफ्टटा थिला जो काशी यात्रार नोवेल रिसेंटली पब्लिश होई थाए. राइट कौन? सो सी ओपन्ड इट एंड read immediately the title Kashi Yatra by Triveni. Kashi Yatra by Triveni. And the publisher name what? Triveni. The title was Kashi Yatra. And I knew then that my student had passed with the flying color. My student had passed with the flying color. That means what is that flying color? Flying color, wealthy. So the writer, who is writer? Sudha Murthy. Sudha Murthy became so elated, so glad. Okay, by glad that her student was passed with correct with flying color. Right? I hope that this video will be very helpful for you and you loved this video. If you loved this video, please do not forget to like, comment and share. I will bring the next video in upcoming video. Okay, thank you. All the best and happy learning.